Asslamoalaikum students, this is Malaika and today I have an interesting topic to discuss about, which is plot formation or story formation. So how to write an eye-catching plot and how to write a story and what are the steps. So all of these are discussed in today's video. So let's get straight into it. So what is plot? First of all, we should know about it. That a plot is the structure of a story, the sequence of events that are going to happen, and a plot can have different timelines. Whether it can be in past with present, it can also go in future, then again in present. So it can have different timelines. It is basically the structure of a story, that how the story is going to proceed, what will be the sequences of events, and what will be the ending of it. Now the plot consists of 5 main elements. First is about exposition. Exposition, then we have rising action, after that we have climax, then falling action, and the last we have resolution. So exposition is basically the first element of plot writing, and it consists of introduction and setting of the story. Introduction may mainly consist of the introduction of characters of a particular event, or the introduction of the story, the characters, and what is the conflict, and how will the story proceed, or the introductory part of the story. The second point is about setting, when, where, how this story is going to proceed, when it was set, at what time, at what place it is being done, how is the story unfolding itself. Exposition also consists of the characters, which are characters are also of two types, major and minor. मेजर कैरेक्टर्स भी होते हैं, माइनर कैरेक्टर्स भी होते हैं. मेजर कैरेक्टर्स हमारे पास वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करी होती है, एंड द माइनर कैरेक्टर्स आर, यू कैन से द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, जो कि मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी को सपोर्ट करते हैं. नाउ अब किसी भी स्टोरी में किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट डाला जाए. सो कॉन्फ्लिक्ट्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारे पास जो है वो जो मेन कैरेक्टर है उसकी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं. सो दैट आर द इंटरनल और दैट आर पर्सनल इश्यूज़. And the external conflicts consist of natural disaster or society or external interference. कोई भी externally around people जो है वो impact करें तो वो external conflicts होते हैं. natural disaster भी हो सकते हैं तो external conflicts होते हैं. The second element is rising action, and it's all about the problems faced by the main character or the sequence of problems. सो राइजिंग एक्शन में हम जो है तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप मेन कैरेक्टर की लाइफ में या स्टोरी में आ रही होती हैं. अच्छा, मेन कैरेक्टर भी हमारे पास टू टाइप्स का होता है, द प्रोटैगनिस्ट एंड द एंटैगनिस्ट. सो द प्रोटैगनिस्ट इज़ द गुड गाय और द गुड पर्सन, एंड एंटैगनिस्ट इज़ द बैड गाय और द वन दैट अपोजेस द प्रोटैगनिस्ट. दिस पॉइंट, so the rising action is the point where the story proceeds, unfolds itself and twists are developed. यानी कि स्टोरी जो है वो आगे प्रोसीड करना शुरू होती है, प्रॉब्लम्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होते हैं, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मेन ट्विस्ट हैं, जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो अब हमारे पास आते दिखेंगे. नाउ क्लाइमेक्स इज बेसिकली द पार्ट when suspense or excitement is at its highest point. This is where the reader is going to get goosebumps and butterflies in his or her stomach. So what happens in a climax? The suspense or the excitement is at the highest point. Like we do not know what will happen in the next part. हमारे पास सस्पेंस है वो इतना हाई हो जाता है, इतने एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है कि अब हमें नहीं पता, वे अनश्योर कि अब आगे क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दूँ एक स्टोरी में से कि अ पर्सन इज़ अबाउट टू जंप फ्रॉम अ हिल, एक पर्सन जो है वो हिल से कूदने वाला है, गिरने वाला है, एंड आपको नहीं पता कि अब आगे क्या होगा. वो बच जाता है, कोई इसे सेव कर लेता है, वो नहीं गिरता. सो मेन हम आपके अब पॉसिबिलिटीज़ आना शुरू होती है कि स्टोरी में आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. सो दैट पॉइंट इज़ नोन एज क्लाइमेक्स.
एंड यहाँ पे जो रीडर है उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि अब हम आके क्यूरोसिटी होती है कि नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट, एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी कीप्स द रीडर्स अटेंशन, और इस तरह रीडर का जो अटेंशन है वो स्टोरी के ऊपर रहता है. The fourth element is falling action. The falling action is the point when things start to solve out, the story gradually proceeds to end and the solutions are coming. Unlike हमारे पास राइजिंग एक्शन जहाँ प्रॉब्लम्स और इवेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हुए थे, सो नाउ जब आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी में सोल्यूशन आने लगता है, द मेन कैरेक्टर फाइंड पार्ट्स, उसको पार्ट्स मिलते हैं, उसकी स्टोरी इजीली सॉल्व होना शुरू होती है. सो दैट इज़ द फॉलिंग एक्शन कि अब हमारे पास स्टोरी फॉल डाउन हो रही है, एंड की तरफ आ रही है. The last part is the resolution, and the fifth element you can say is resolution. Resolution is basically the endings or the possibilities of endings. जो कि स्टोरी की एंडिंग होती है वो रेजोल्यूशन कहलाती है. नाउ टू टाइप्स ऑफ एंडिंग्स होती हैं, ओपन एंडिंग्स एंड क्लोज एंडिंग्स. ओपन एंडिंग्स आर ऑलवेज वेयर व्हेन द राइटर लीव्स ऑन इट ऑन टू द रीडर वॉट द एंडिंग विल बी, कि अब रीडर डिसाइड करता है कि एंडिंग क्या होगी. जो है उसमें राइटर ऐसा सस्पेंस एंड में छोड़ देता है, ऐसी सीक्वेंस या ऐसा स्टोरी एंड में छोड़ देता है बिल्कुल बीच में, कि अब आगे बहुत सी पॉसिबल एंडिंग्स बन रही होती हैं, बट अब ये रीडर के ऊपर है कि वो किस तरीके से उस एंडिंग को, कौन सी एंडिंग डिसाइड करता है स्टोरी के लिए. एंड क्लोज एंडिंग्स वेयर लाइक हैप्पीली एवर आफ्टर, एंड सो इस तरह से हमारे पास जो क्लोज एंडिंग्स होती हैं, जो प्रॉपरली स्टोरी एंड हो रही होती है, वो क्लोज एंडिंग्स होती हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्लॉट फॉर्मेशन. I hope you like it. Do subscribe my channel and don't forget to like it and share it with your friends. Allah Hafiz.